So basically आपका जो A2 physics है ना, that is divided into two parts. Going to appear for two papers in fact. First is paper 4 and the other one is paper 5. You have appeared for 3 already. Paper 1, 2 and 3. Now you're going to appear for 4 and 5. That's how your A-level physics is divided into 5 papers or 5 components. Now in paper 4, paper 5, let me tell you that it's a lengthiest paper among all of them. So of 2 hours, 100 marks, and it has the highest weightage as well. Okay. And it's basically consists of structured questions pertaining to the topics that you are going to learn. Paper 5 is actually it's practical based, but you're not going to perform the practical, but instead you're gonna do the analytical work pertaining to the practical. You're going to perform analysis over a certain. You will be given a practical and going to perform analysis. You're going to plan how to perform it. All right. जैसे कि आपको जब आप प्रैक्टिकल का पेपर के लिए अपेयर होती थी या होंगी अभी, तो उस पेपर में आपके लिए क्या होता है, आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है ना, गिवन ऑल द इंस्ट्रक्शंस के आपने हाउ टू परफॉर्म दैट प्रैक्टिकल. तो सिमिलरली अब आपने क्या करना है और फिर आप उसको परफॉर्म करती हैं, देन यू राइट डाउन द रिजल्ट्स एंड ऑल दैट. नाउ व्हाट यू गोना डू इज, अब आप ना you're gonna do that work which you actually have been given till now. अभी आपको जो चीज आपको given होती थी प्रैक्टिकल के पेपर में, all the instructions, steps that you are going to carry out, वो अब आपको क्या करना है, you have to plan it yourself. You have to design an experiment. आपको एक situation दे दी जाएगी and you have to then plan accordingly के what should be the measures, what should be the steps to be taken, what should be the safety measures that you are going to implement and all. And then in simple words, you have to design an experiment, and that's all you're going to write it down. Not going to perform it, you're just going to write it down. And of course, you have to follow some protocols. It's more or less the same. There's some points that are very repetitive, and they're going to use in more or less in every question. So that makes it a little easier. और उसके अंदर there's another question. Paper 5 consists of 2 questions. Question 1 के अंदर आपने planning करनी होती है, and second question actually is based on analysis actually. You've been given a graph, ठीक है ना, उसमें आपको graph draw करना होता है of the results of a certain experiment. You have been given a results of a certain experiment. You have to draw a graph and then solve the following questions. Again, that's there are certain details as well we're going to discuss when we are going to move on to paper 5. Paper 5 basically आपका directly past paper से ही होगा, and then we're going to do that begin it in March. March का पूरा महीना आप पहले हम paper 4 cover करेंगे. उसमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो फेब एंड तक इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कवर हो जाएगा. फिर उसके बाद आप ईयरली पास पेपर्स बैक हैंड आप करती रहेंगी पेपर 4 के, और पेपर 5 हम डायरेक्टली करेंगे पास पेपर से, और वो मार्च में हम बिगिन करेंगे. दैट विल हार्डली टेक 2 वीक्स. 2 वीक्स के अंदर जितनी क्लासेस होंगे उसमें मैं पेपर 5 आपके साथ डिस्कस करूंगा. इनफैक्ट मैं 4-5 मुश्किल से 4 से 6 पेपर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा. देन you will get to know everything about that paper, how to solve it. मतलब वो इतना मुश्किल है ही नहीं. 2 क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन 2, ठीक है ना, या चले 4 क्वेश्चन 1 4 क्वेश्चन 2, यानी कि आपके एक साल में 4 पेपर्स होते हैं, तो दैट विल बी मोर देन इनफ. ठीक है ना, वो आपके लिए इनफ होंगे कि हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 1 एंड हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 2. बस दैट विल बी इनफ, और फिर वो आपके फिनिश अप हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम ऑफ 2 वीक्स. ठीक है ना. अच्छा, अब now let's come to paper 4. The curriculum for paper 4 is actually you can say it's an extension of what you have learned in AS. Of course, there are new topics as well. Now I have divided this whole curriculum. Actually, your syllabus code is 9702. You had appeared for 21. You had appear for 12, 1, 2, 2, 2, and 3, 2. Now I'm gonna appear for 4, 2, and 5, 2.
Correct. Mechanics. Acha, the first section is of mechanics, and we're going to cover now. You had already covered like eight. How many topics? I reckon 7 topics you covered in AS. I'm gonna cover 3 more topics in A2 in mechanics, and that are Yes. uniform circular motion, gravitational fields, and simple harmonic motion. Again, gravitational fields, you do have a good idea about gravitational field, but whatever you learned about gravitational fields were almost related to uniform gravitational field that is within the Earth. But now we're going to discuss the gravitational field outside the Earth, and of course that's not uniform as you go away from the Earth in space. So things become actually difficult to study, and it's not the same as what you had when you are within the Earth. All right. So you say that within the Earth, the gravity or the gravitational force or the gravitational field strength remains fairly constant at 9.81. It do becomes a little less at poles, but that is it's very insignificant. अगर 9.81 कोर पे है इक्वेटर पे है तो 9.879 आपकी poles पे होगी. Now that's considered to be as fairly constant if you are within the Earth. But as soon as you skip from the Earth's surface and move into the space, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके पास अरीबा फिर आपके पास things become different. Now your gravitational field strength, your gravitational force of attraction, your gravitational potential, nothing remains constant, and it gets changed as soon as far as you move away from the Earth's surface. All right. So that's of course there are a lot of details in that. We're going to discuss about that as well. And now the second section is thermal physics. You haven't learned about thermal before. You might have you did in O levels, but that wasn't part in AS. You did in you have already done in O levels, but I'm going to give you an idea about thermodynamics. I have already done about kinetic theory of gases, so that's not something new. Yeah, but there are certain derivations as well that you're going to see in kinetic theory. So it's quite it's quite a easy section. And then comes up electricity and magnetism. Again, magnetism was not part of AS. You have already learned about it in O levels, but yeah, that's not going to be a part of the curriculum again in A2. So electric fields again. Electric fields में हमने जो AS के अंदर discuss की थी वो that was uniform. Now we're gonna discuss about non-uniform electric fields. Again, when you skip when you don't have like parallel plates, if you have two objects that are not that are not like similar to parallel plates, तो वहाँ आपके पास electric fields uniform नहीं होती. So of course they are non-uniform. So again they vary when you separate them. अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं या प्लेट्स हैं, अगर वो पैरेलल नहीं है, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, उनके दरमियान फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, तो अगर आप उनके डिस्टेंस को, उनकी सेपरेशन को वेरी करेंगे ना, तो फिर वो दे डोंट गोइंग टू चेंज लीनियरली. वो एक प्रोपोर्शनल चेंज नहीं आता, एक नॉन प्रोपोर्शनल चेंज आता है. दैट्स गोइंग टू बी डिस्कस एज वेल. You're going to learn that's going to be new for you, capacitors. You have heard about capacitors that are being installed in different electrical appliances like fans or machines and all. So capacitors हम discuss करेंगे. We're gonna discuss a lot of things about magnetic fields which you haven't learned in O levels, and you're gonna discuss about alternating currents. Alternating currents भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है O levels में. इसमें भी ज़्यादा details नहीं है, but yeah, there's some things that are new to you, are going to be new to you as well. As for medical physics, now there's now the rest of it. This thing. You can this can be categorized as application of physics. You can real life applications, and of course physics is used in medical science as well. So in medical physics, what we're going to talk about is ultrasound. We're going to discuss what is ultrasound and how it has been used to form body, how you used to scan and form the body image. Same for X-rays, and same for this is actually
MRT. All right, magnetic resonance scanning image. अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है communication. In communication as well, we do have physics, and you might have heard about FM and AM, FM radio and all. So FM, AM, that's again sort of concepts that are used in physics. Then in electronics, you're going to discuss, learn about operational amplifiers. OP-amp, you might not have heard about this. And LEDs. LEDs आपने पढ़ी है, आपको पता है LED क्या होती है, but we're going to discuss that how these work. And strain gauges. Strain gauges भी आपको बताऊंगा कहाँ use होते हैं. और इस then comes up nuclear physics. In nuclear physics, you have we're going to discuss about the we're going to discuss about in nuclear physics. We're going to discuss about the structure of an atom and all that. All right, different particles. And quantum physics is something again completely new for you. I'm going to explain what quantum physics is. And nuclear physics, we're going to discuss about radioactivity as well, nuclear fission, nuclear fusion, all that which you have studied in low level. So whatever we're going to learn in nuclear physics, it's not going to be very much new for you. But yeah, whatever we're going to learn in quantum physics, that's going to be new for you all. ठीक है ना? So this, how was the syllabus? Miss रीवा, बात समझ आ गया आपको बेटा? नहीं आई? मुझे समझ आ गई. तो हाँ नहीं बेटी? नहीं. मैसेज रीड किया ही नहीं है अभी तक. Anyways, let's come to the first topic, and that is uniform circular motion. Acha, Ariba, let's suppose I have Yes, sir. an object, and I'm just making it move in a circular motion. For example, I'm standing over here like that, and I'm making that. It's an object. This is an object. It's attached to one end of the string. The other end of the string is in my hand, and I'm just making it move in a circular motion. I'm just whirling it around myself. All right. So now I have drawn it that how the motion of this ball is going to look like. It's a circular motion of this ball, and of course, when it's going to undergo circular motion, so of course, if I'm making it go around in a circular motion, so I'm going to be at the center point. Again, something non-intuitive, and this distance, or you can say the length of the string. The string is going to be at over here at some instant, and at some other instant it's going to be over here. Some other instant the object is going to be here. So all these are actually the length of the string. All these are the strings at different instants. The position of the string as well as this object at different instants. And so this length of the string is also going to be the radius of this circular motion, this circle. All right. ये जो length है string की, ये दरअसल क्या होगा, ये जो है ना इस सर्कुलर मोशन का जो है ना वो रेडियस भी होगा. बात समझ आई यारी भाई? नहीं आई? ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, ये आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस भी होगी. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, and I'm making it move in a circular motion in an anti-clockwise direction, whereas this length of the string is going to be the radius of this circular motion. बात समझ आई या नहीं आई अरीबा? Is it clear बेटा? Yes, sir. अच्छा, now one thing that you always have to
keep in mind is that whenever an object is moving in a circular motion, so whatever the position of the object is, now you're gonna have the object at different position at different instants. यानी हर instant पे, every instant पे आपके पास जो position होगी object की moving in a circular motion वो different होगी. अभी इधर है, अगले किसी instant पे इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा. तो हर लम्हे जो आपकी position है object की वो change हो रही है. Now you have to always remember that whenever an object moves in a circular motion, the direction of the object is constantly changing, but the speed remains the same. The magnitude of the velocity, which we call as the speed as well, that doesn't change when an object moves in a circular motion. What changes is the direction. Every instant, हर instant पे आपकी direction change हो रही होती है, लेकिन जो speed, जो magnitude है velocity की, जिसे हम speed भी कहते हैं, वो change नहीं हो रही होती. Now, what does physics says that आपके पास जो velocity होती है, of course that is a vector quantity, and so you have both the magnitude and the direction when you talk about velocity. तो अगर velocity की magnitude change नहीं हो रही अरीबा और सिर्फ direction change हो रही है, मैं तब भी उस सूरत में यही कहूंगा कि velocity change हो रही है. बात समझ आई या नहीं आई? आप दोबारा बोलें. मैं कह रहा हूं कि I know कि when an object moves in a circular motion, so you can see that at every position आपकी जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो रही है. एट एवरी इंस्टेंट आपकी जो डायरेक्शन है ना वेलोसिटी की वो चेंज हो रही है. अच्छा, आप कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा हो और लेट सपोज अभी वो इधर है, फिर अगले किसी लम्हे इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, और मुझे फाइंड आउट करना हो कि यार इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो the direction of the velocity for an object moving in a circular motion is always tangent to its position. यानी कि अगर वो यहाँ पर है, तो उसकी जो वो है direction of velocity, that will be tangent to its position. Of course that doesn't look like tangent, but let me correct it. So मैं correct कर देता हूँ. Like it's going to be like that. Let me correct. Yep. It's going to be like that. Is it clear, Ariba, or not? Clear, yes, sir. So whatever the position of the object is, you will always going to have the direction of the velocity at tangent to that position. So अगर आपकी object की position ये है, so if you're going to draw a tangent at this position, that's going to give you the direction of the velocity. अगर इधर है, so the tangent at this position is going to give you the direction of the velocity. अच्छा, ये ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये है अरीबा कि अगर लेट सपोज आप इसको घुमा रही हैं, सर्कुलर मोशन में घुमा रही हैं, और आपको ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे जैसे ही आता है, आप अपनी जो स्ट्रिंग या रोप है जिसे आप होल्ड करके रखा हुआ है, इफ यू जस्ट लेट इट गो, तो मुझे आप बताओ कि अगर आप हाथ से कोई ऑब्जेक्ट घुमा रही हो सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग से जो अटैच्ड है, और आप अचानक एक पोजीशन पे आके आप एकदम अपनी रोप को छोड़ दें, सो व्हाट यू थिंक, विल यू एग्री कि आपकी जो बॉल है वो हमेशा उस पोजीशन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करेगी? ऐसा ही होता है, नहीं होता? सो दैट्स व्हाई वी से दैट कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, तो उस मोशन में आप ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, तो उस पोजीशन आपकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है वो हमेशा उस पोजीशन के टेंजेंशियल होती है. तो these are all tangential direction, ठीक है ना, at different positions, giving you the direction of velocity. ठीक है ना, ये different positions पे आपकी जो direction of velocity वो मैंने आपको बना दी. अच्छा, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर आपके पास, अच्छा, ये इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को देखकर विल यू एग्री अरीबा कि आपकी हर इंस्टेंट पे आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है? हो रही नहीं हो रही? अगर इवन इधर भी है, तो अगर आप देखो इधर मैं टेंजेंट बनाऊं, तो what you can see by looking at all these tangents कि आपकी हर इंस्टेंट पे जो भी आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है.
तो इन अ सर्कुलर मोशन आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है दैट कॉन्स्टेंटली चेंजेस, बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पर लेट सपोज 2 मीटर्स पर सेकेंड है तो इधर भी 2 मीटर्स पर सेकेंड रहेगी, इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी। इट्स मूविंग इन अ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। समझ आई बात या नहीं आई? जी समझ आ गई। तो अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था रीबा के एक वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। मैग्नीट्यूड को हम स्पीड भी कहते हैं, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है ना उसको स्पीड भी कहते हैं। अब ये तो चेंज होती नहीं है, और ये हर वक्त चेंज हो रही होती है। ये नहीं चेंज हो रहा, वो हर वक्त चेंज हो रहा है डायरेक्शन। तो मुझे बताओ, अगर इन दोनों में से मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई एक भी चीज चेंज होगी तो मैं ये कहूंगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। यस, मैं कहूंगा ना। तो अब आप सर्कुलर because the मोशन, direction of the velocity is changing. हाँ, अब जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी जब भी चेंज होती है, चाहे वो डायरेक्शन की वजह से हो रही हो या मैग्नीट्यूड की वजह से हो रही हो या दोनों की वजह से हो रही हो, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है वी ऑलवेज से कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, यानी 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड जा रही है तभी ये एक्सेलरेशन है। नो, इवन इफ द मैग्नीट्यूड डजंट चेंज, only the direction changes, even then the object is said to have a changing velocity and it's in fact said to be accelerating. You All have right an or not? acceleration. Yes. ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा, अब अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो भाई न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन तो तभी होगी जब आपके ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी। ऐसा है या नहीं है? जी हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है मुस्तकिल, तो उस पर हमेशा कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी। और उस रिजल्टेंट फोर्स, अब वो रिजल्टेंट फोर्स कोई भी हो सकती है, यानी कि इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म in different applications, like if you are like moving around a for example अगर आप एक राउंड अबाउट है, if you are moving around if you are moving a car across a roundabout, so again you are moving that car in a just making that car move in a circular motion, so you're going to have the resultant force going to act upon that car. अच्छा, अगर आप कोई स्ट्रिंग जो है वो कर रहे हैं, if you have an object attached to one end of the string and just making it whirl around yourself, so again you have that object moving in a circular motion, so there will be resultant force act करिए। but again in different situations when you have an object moving in circular motion, तो resultant force की जो फॉर्म होती है that may differ, you know। अच्छा, अब उस resultant force को हम जो है कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपीटल फोर्स। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में हो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी हमेशा लगेगी, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको हम यूज करते हैं एफसी उसके लिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमेशा वो जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही होती है जो सर्कुलर मोशन में होता है, तो उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल होती है। बात समझ आई या नहीं आई सरीबा? तो अगर आप
Hello. हाँ बच्चों Teacher आप Sana. लोग बच्चों आप लोग अभी लीव कर दें और 8:15 पे रिज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? अभी दूसरी क्लास एंड नहीं हुई। Sir, class finish? नहीं we had 10 minutes. इधर सुने, आपने आखिरी चीज क्या सुनी थी अरीबा? I was just telling you I You were didn't telling me know about the centripetal force. हाँ, तो have you got the idea? मैं समझा रहा था, मैं आपको समझा रहा था कि आपके पास let me share the screen. समझा ही रहा था कि आपके पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन मूव करता है तो उस पर हमेशा रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करती है. दैट्स समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, और उस रिजल्टेंट फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. बस फर्क ये होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ फोर्स. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, दैट्स a fundamental force. It's a kind of a force that acts due to some presence of something. But centripetal force is a resultant force. Centripetal force is a name given to the resultant force acting on an object while moving in a circular motion. And why it has been named like that? Because it always acts towards the center. Whatever the position of the object is moving in a circular motion, it's always going to act towards the center. So if it is the object is over here, so it's going to act towards the center like that. That's going to be the direction of the centripetal force, Fc. If it is over here, the direction of the centripetal force is going to be like that. It's Fc. Now, of course, the resultant force we know in different situations we're going to have resultant force in different forms. Like for example, if you talk about planets, so you have the planets moving around in a circular motion, moving around the sun in a circular motion. तो वहां पर आपके पास you don't have any string. So then, of course, in case of string, the resultant force of the centripetal force is going to be different. In case of planets, it's going to be different. It's actually the force of attraction. When you have the in case of planets, you have this as your sun and you have this as your planets, and that's you are moving around in a circle. ठीक है ना? ये आपका sun है और उसके around आपके planets revolve कर रहे हैं in a circular motion. So what's that? What is that keeps those planets moving in a circular motion on the sun, and that's the centripetal force. But what kind of in what form that centripetal force is actually centripetal force is in the form of the gravitational force. ठीक है ना? वहाँ पे जो sun और जो planets के बीच में gravitational force of attraction होती है ना, that is acting as the resultant force or the centripetal force keeping all those planets in a circular motion. So centripetal force actually helps. Centripetal force helps you to helps the object move in a circular motion. If you just somehow remove the centripetal force, जैसे कि अगर आप planets और sun के बीच में से gravitation force of attraction खत्म कर देंगे, so you not going to have the planets anymore moving in a circular motion around the sun. ठीक है ना? तो इसी तरह if in case of string you have the tension, जो आपकी जो यहाँ पे tension है string में, that's why I have represented in this form. It's the arrow towards the center, and you have I've written a T. Now there's a tension in the string over here is going to act as a centripetal force. हर केस के अंदर आपकी centripetal force की form different होगी. Similarly, if you are if you are just making the car moving around roundabout, तो उसमें आपके पास जो जैसे आपकी कार इधर है, तो यहाँ पे आपके पास जो कार और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है ना, that's going to act towards the center. That's going to act as a centripetal force. So in different situations, when you have the objects moving in a circular motion, the form of the centripetal force is going to be different. The centripetal force खुद एक कोई force नहीं है, it's just the resultant force. अब resultant force कोई भी force बन सकती है. अच्छा, अब आप जरूरी नहीं है कि कोई एक ही force आपकी जो है ना in a certain situation act कर रही हो. ठीक है ना? हो सकता है आपका किसी सिचुएशन में मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करेंगे. जैसे अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर है, उस पे इस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लग रही है और इस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लग रही है इन अ सर्कुलर मोशन, तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, इसका और इसका, जितनी भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट का जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उस पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट करें, उनका जो रिजल्टेंट है ना, that's going to be what you call it as a centripetal force.
तो कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जैसे कि आप अगर प्लैनेट्स और सन की बात कर लें तो उसमें और कोई फोर्स है नहीं, सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। तो इन दैट केस आपके पास फिर ये सन है और ये प्लैनेट है, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही, चूंकि आपके पास द ओनली फोर्स एक्टिंग, तो वही रिजल्टेंट बन जाएगी और इसी को हम सेंट्रीपिटल कह लेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके पास कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उस पर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रही हो, तो उसमें से आप कोई चूज नहीं करती अपनी मर्जी से कि कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स है। दरअसल उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी योर सेंट्रीपिटल फोर्स। इज इट क्लियर बेटा और नॉट? जी, समझ आ गई। तो वी आर गोइंग टू लुक इनटू सिचुएशंस एज वेल इन क्वेश्चंस जहां पे आपके पास एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी और वहां यू विल बी कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट एंड दैट इज समथिंग यू गोना टेक एज योर centripetal force. So you just, what you need to know is the idea, right? What is a centripetal force? It's actually the resultant force acting on an object moving in a circular motion that keeps it move, or yeah, इसको यूं भी कह सकते हैं, and a resultant force that keeps the object move in a circular motion. ठीक है ना? और सर्कुलर मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उस पे रिजल्टेंट फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाटएवर यू से, तो हमेशा एक्ट करेगी, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, और जो एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेलरेशन हो रही है ऑब्जेक्ट की जो कि सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। AC वी रिप्रेजेंटेड विद AC, ठीक है ना? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir, it's clear. So now I'm gonna continue it tomorrow. Tomorrow we're gonna finish up with this chapter, और Alright. हम इससे कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो ये बहुत आसान सा और सिंपल सा है, बट व्हाटएवर यू लर्न नाउ, आपने छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ये जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि स्ट्रिंग के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स दरअसल टेंशन होती है, प्लैनेट के केस में ग्रेविटेशन होती है, सरफेस के केस में फ्रिक्शन होती है। बट अगेन दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। यू मे कम अक्रॉस सिचुएशंस जहाँ पे आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, वो सिर्फ सिंगल फोर्स नहीं होगी कोई, but that's going to be the resultant of multiple force which you're going to calculate, and resultant निकालना आपको आता है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। सही है? अच्छा, इसमें और भी एक दो चीजें हैं वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है? Okay. मतलब थर्सडे को डिस्कस करें, ठीक है बेटा? ओके, Okay. याद रखिए Sir.